बात समझ में आए तो ताली बजा देना, नहीं तो टैक्स लग जाएगा, कि बचा उस पर टैक्स है, एक ताली पे और एक सांस लेने पे। भाई मंच पे बैठे हुए सारे मेरे मित्र राजू भाई दीक्षित, दीपक भाई देसाई, यहाँ के स्थानीय हमारे जगदीश भाई, पीयूष भाई और हमारी बहन प्रीति बहन ने बहुत कुछ कह दिया। ज़्यादा तो कुछ कहने को बचता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब सुखी संपन्न लोग हैं, आज देश के मुख्य लोगों में बन गए। आज करोड़ों वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ये दो लोगों की बोली की वैल्यू है देश में। अगर अदानी और अंबानी कह दे बनाया, आज हमें इनकी जमीनों की जरूरत है, हमें क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, तो मोदी साहब को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ऑर्डर पास करने में। गुजरात के मुख्यमंत्री को कहेंगे भाई અહીંયા એક ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ બનાવવાનું છે, આ બધી જગ્યા બુલડોઝર પ્રથા ચાલુ કરી નાખો ને મોકલી દો, બધાના ઘર ઉપર બુલડોઝર મોકલી દો, તોડી દો। આજે અમદાવાદમાં શું ચાલી રહ્યું છે, સાબરમતી જો છે કે નહીં બુલડોઝર બધા, કોને ગમે છે? તમને ગમે છે? પણ તમારો પણ વારો આવી ગયો। જે લોકો આપતા હતા એના તો ગયા ને, સાબરમતી વિસ્તાર, ઓઢવ વિસ્તાર, અમદાવાદમાં ઘણી બધી જગ્યા છે, ગુજરાતમાં ઘણી બધી જગ્યા છે, ભારતમાં ઘણી બધી જગ્યાઓ છે। આખા દેશમાં અદાની ને અંબાની, તમે 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં, અમદાવાદમાં, બાપુનગરમાં ભાજપને બધા લોકો મત આપે છે કે નહીં? એક વસ્તુ સમજો, આ ઘરની લાઈટ બંધ છે, બધા લોકો જો બંધ છે, કેમ? આ ભાઈને શોખ છે? ના, વીજળી મોંઘી છે, સૌથી મોંઘી છે। તમે જેટલી વીજળી વાપરો છો ને સાહેબ, એટલું જ એની ઉપર ટેક્સ આપો છો તો નહીં આપ્યા? બધા આપો છો ને? મારી વાત સમજાવવા આવશે? આવે છે કે બસ બંધ કરી દઉં? તમે કહો તો બંધ કરી દઉં, फिर बोलेंगे मैं बोलूंगा तो बोलता है कि बोलता है, तो बा बोलती बा विश्वगुरु बनी गયું एवा एमનું कहना है। भारत विश्वगुरु बन गया ऐसा मोदी साहब का कहना, भाजपाइयों का कहना है, पर हमारे विस्तार में कहाँ एक भी विश्वविद्यालय खुला? हमारे विस्तार में कहाँ विश्वविद्यालय खुला? अभी पीयूष भाई ने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का सालाना औसत 68,000 रुपए जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूल में 20,000। तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? आप लोग टैक्स भरते हो, अलग से भरते हो। आप लोग एक एक आदमी जितना साल का कमाता उतना चीजों पे टैक्स भर देता, आपको पता भी नहीं चलता। अरे सवाल करो,